Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS and our unit is design of plate grider and our topic is question of throw type plate grider. Now we have already rewritten its a step. Now today we are going to solve its question. So we have the question: design a throw type plate grider bridge for single track broad gauge loading for the following data. We have the data: effective span 24 meter, spacing of main grider 5 meter center to center, spacing of cross grider 3 meter center to center, spacing of stringer 2 meter center to center, timber slippers and their spacings 250 mm into 150 mm into 2.8 meter, density of timber 7.4 kilonewton meter cube. Weight of stock rail, sorry I have left one thing in timber slippers, 250 into 150 mm into 2.8 meter at the rate 4 meter 0.4 center to center. So density of timber 7.4 kilonewton meter, weight of stock rail 440 newton meter, weight of guardrail 260 newton meter, weight of fastening 280 newton meter of track, and last spacing of stringer 3 meter center to center. Now further we are going to solve the question. For solving the question, first we are going to design stringer. So design of stringer, I have made a rough diagram for explaining you. So assume this as a sectional view of your plate grider. So this is our main grider beam and this is our stringer beam. So span of stringer beam 3 meter center to center we have already seen in the question. Now we are going to calculate for the dead load. So dead load, weight of stock rail per meter run of the track equals to 2.2 into 0.44. It is the weight of the stock rail given, but it has been given in Newton meter, so we are going to convert it in kilonewton per meter. So the value is 0.88 kilonewton per meter. So now the weight of guard rail per meter run of the track equals to 2 into 0.26 equals to 0.25 kilonewton per meter. Weight of fastening, as it is you have to write the value but convert it in kilonewton per meter, that is 0.28 kilonewton per meter. Weight of slippers per meter run of the track equals to 0.25 it is given in mm, so I am converting it into meter. So we have the value 0.25 into 0.15 into 2.8 into 7.4. It is the weight of the slippers, density of the slippers upon 0.4, the spacing equals to 1.97 kilonewton per meter. Now assume self weight of a stringer beam. It is already given in step that you have to assume the self weight equal to 2 kilonewton per meter. Then total dead load per track, add W1, W2, W3, W4. So 5.62 kilonewton per meter. Now live load. So अपने पास स्पान लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर. लाइव लोड के लिए स्पान लेंथ अपनी 3 मीटर दे रखी है. आप स्टेप्स में ध्यान दीजिएगा. टोटल लेंथ जो इस दे रखी है वो अपनी है 24 मीटर. सो इसके लिए अपने पास 3 मीटर दे रखी, इसलिए मैंने 3 मीटर ली है. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा. EUDL फॉर रिवाइज ब्रॉड गेज लोडिंग फॉर स्पान लेंथ L कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी अपने पास 3 मीटर ही हो जाएगी L की वैल्यू. अब इसी के थ्रू अपन क्या करेंगे, कोड में देखेंगे और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू और शेयर फोर्स की वैल्यू नोट आउट कर लेंगे. तो कितनी आ गई अपनी 490 किलोन्यूटन और 662 किलोन्यूटन. ये मीटर में होगी, किलोन्यूटन मीटर में, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट किलोन्यूटन पर मीटर में शो करते हैं. सो नाउ इम्पैक्ट लोड के लिए एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द L, दैट इज L इक्वल्स टू 1.5 इंटू सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ क्रॉस बीम, दैट इज 1.5 इंटू 3, क्योंकि अपनी स्पेसिंग यहाँ चेंज हो चुकी है इसलिए वैल्यूज फर्दरली चेंज होंगी. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा. L इक्वल्स टू 4.9 मीटर. Then CDA equals to 0.15 upon 8 upon 6 plus L. वैल्यूज पुट ऑन करिए तो आपके पास CDA की वैल्यू आ गई 0.91. नाउ इम्पैक्ट लोड इसके थ्रू निकाल लेते हैं. तो इम्पैक्ट लोड कितना आ जाएगा अपना
0.91 इंटू 490 दैट इज 446.8 किलो न्यूटन। अब आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।